class 12th. Today we will study activation energy. What is activation energy and what is activity complex? So activation energy, students, for effective collisions to take place in a reaction for effective collisions, as per the collision theory, reacting molecules must collide, and there must, for reaction to take place, there must be effective collisions. So for effective collisions, reacting molecules must have some energy. Reacting molecules must have energy, must have minimum amount of energy. Minimum energy, that energy is called threshold energy. So for effective collisions, these reacting molecules must have threshold energy. And all the reacting species in a all the reacting in a reaction, in a particular reaction, all the reacting species जो होते हैं under all the reacting species in a particular reaction do not have this energy. In a particular reaction do not have threshold, I mean do not have the threshold. All the reacting molecules do not have this particular energy, that threshold energy. So energy is supplied to the reactants. The excess of energy, that excess of energy, this excess of energy or the extra of energy, excess of energy, this energy is, I will write, over and above the kinetic energy. एक तो आपकी जो reacting molecules की अपनी energy होती है, that is called average energy, over and above the average energy. जो एवरेज एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की होती है, उससे उसके अलावा जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, एक्सेस ऑफ एनर्जी ओवर एंड अबव द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स, मस्ट बी सप्लाई टू, जो हम रिएक्टेंटों को सप्लाई करते हैं, सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. So activation energy is the energy supplied to the reactant so that their energy becomes equal to the threshold energy, is called activation energy. I have written the definition: the excess of energy or the extra energy over and above the average energy which must be supplied to the reactants is known as activation energy. अब activation energy किसके बराबर होती है? We can activation energy EA is equal to, activation energy is equal to threshold energy, जो आप थ्रेशोल्ड एनर्जी जो आप एनर्जी देते हैं, ताकि इसकी माइनस एवरेज एनर्जी. इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. एवरेज एनर्जी इज द एनर्जी विच द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पजेस, और जब हम इनको एनर्जी देते हैं तो इनकी एनर्जी बन जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी. सो activation energy is equal to the threshold energy minus the average energy of the reacting molecules. Now हर किसी reaction जो each reaction has a definite value of activation energy. डेफिनेट वैल्यू, हर रिएक्शन का एक अपनी हर रिएक्टिंग स्पीशीज या हर रिएक्शन का एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होता है. ईच रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस डिसाइड्स, यही डिसाइड करता है हमें, डिसाइड्स द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स which are effective and it decides the fraction of collisions which are effective. Now अगर आपकी रिएक्शन है, कोई रिएक्शन इन इफ मैं लिखता हूँ, अगर इफ जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी इज लो फॉर अ रिएक्शन, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, अगर कोई रिएक्शन उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, सो द मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल हैव दिस एक्टिवेशन एनर्जी and the fraction of total collisions will be high. If the fraction of total effective collisions will be high, will be large. So the reaction जो इसको होगी, that is fast. यानी अगर किसी रिएक्शन में अगर रिएक्टिंग स्पीशीज हैव देयर एक्टिवेशन एनर्जी लो, इसका मतलब है जो रिएक्टिंग फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल हैव दिस एक्टिवेशन एनर्जी, सो द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विल बी लार्ज, दैट मींस रिएक्शन विल बी फास्ट रिएक्शन.
अगर किसी का एक्टिवेशन, अगर किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, अगर आपकी कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्टिंग स्पीशीज, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, दैट मीन्स यू हैव टू गिव द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो दैट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ द molecules, fraction of the effective collisions will be low. That means lesser amount of molecules will have this energy, so the fraction of effective collisions will be low, effective collisions will be low. That means reaction जो होगी that will be slow. सो अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो दैट रिएक्शन इज फास्ट. अगर किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, सो वहाँ पर आपका फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो होता है दैट इज लो, सो द रिएक्शन इज स्लो. नाउ व्हेन द रिएक्टेंट्स, जब आप व्हेन रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब, अब जो रिएक्टेंट्स हैं जे एब्जॉर्ब एनर्जी, इक्वल एब्जॉर्ब एनर्जी, अगर उन्हें एनर्जी एब्जॉर्ब की, सो एनर्जी उन्हें एब्जॉर्ब की, दैट इज जो उन्होंने की अभी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. सो एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो मिनिमम एनर्जी जरूरत है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. सो जब थ्रेशोल्ड एनर्जी उनकी आ जाती है, व्हेन द एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, सो their energy becomes equal to threshold energy. So at this state, atomic configuration जो है, atomic configuration of the reactants, at this state atomic configuration is, that is different, that is different from reactants as well as products. That is the atomic configuration at this stage is different from the reactants as well as products. यानी जो उसकी जो इस वक्त जो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट्स, तो जो एटॉमिक कन्फिग्रेशन उनकी बन जाती है वो डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से भी और डिफरेंट प्रोडक्ट से भी. एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड, दैट स्टेज जो इसका स्टेज जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्टेज. दैट्स कॉल्ड एक्टिवेटेड स्टेज, or we called activated state, this is called activated state or activated state or transition state, इसको हम बोलेंगे transition state भी. That means when the reaction absorbs the energy equal to the activation energy, the atomic configuration is different from the reactants and the products, and that state is called activated state or the transition state. Now एंड द स्पेसिफिक, इसकी स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन जो बन जाती है, जो इस वक्त कन्फिग्रेशन ऑफ द स्पीशीज जो बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. नाउ और वी कॉल्ड इट इंटरमीडिएट स्टेट. इंटरमीडिएट स्टेट, इसका मतलब है जब रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब एनर्जी करते हैं इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, तो जो उसकी एनर्जी बन जाती है इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी. सो उस वक्त जो स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन होती है, दैट स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्टेट और दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेट. नाउ फॉर एग्जाम्पल आई विल शो रिएक्शन बिटवीन, हम रिएक्शन लिखते हैं H2 plus I2 gives twice HI. Let me show diagrammatically. Let this H hydrogen, I have seen diagrammatic hydrogen plus I2. Let this I. So जब अब now what will happen, so atomic configuration will be different from the reactants as the products. This is H, I and I. So I have seen diagrammatically we can write this is the activated complex or this is the transition state जो बन जाता आता है, intermediate state जो बन जाता है, this is intermediate state. और इसके बाद it will give HI and that is second molecule HI. So twice HI, it is twice HI. So this will be the formula. So जो कन्फिग्रेशन हमें बन गया, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स. दिस स्टेट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेट और इट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. नाउ इसका मतलब है जो आप एनर्जी देते हैं टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब एनर्जी की, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. अब उन्होंने मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब की एनर्जी तो बनाया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. Energy absorbed by the reacting molecules to form the activated complex. It is also, we can define this is also activation. We can define this is also activation energy. So activation energy is also the energy absorbed by the reacting molecules to form the activated complex. It's called activation energy. Now
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आई विल शो यू डायग्रामेटिकली. Now let us consider reaction. A plus B2 gives AB plus B. Now consider this reaction. Now I will show now A plus B2, this will give the reaction A. This is the activated B, this is the activated state, this is intermediate state or activated complex, and gives AB plus B. Now I will show, for example, graphically I will represent it here. Now this is the energy of the, this is the energy of the this is A plus B2, this is the energy of the reactant ER. So now this I will consider, this is the energy, this is the threshold energy ETH. So first of reactant molecules will absorb this energy, so that the energy becomes equal to the threshold energy. So यहाँ जो this is the energy of the products. So ये आपका जो यहाँ पर बन गया A B B, this is the activity, this is the threshold energy. यहाँ पर आप, this is the threshold energy आपकी जो reactive molecules को आ गई. So this is the, now this is the activation energy. जो reactive molecule ने first energy absorb की, this is the activation energy. और इसके वक्त जो आपका complex बन गया, this activated complex, यहाँ पर activated complex बन गया आपका. And this energy, this is, that means reactive molecules has to cross the energy barrier. So energy barrier reactive molecule ने cross की, this is called activation energy barrier. Activation energy barrier. So first the reactive molecules have to cross the energy barrier. This is called activation energy barrier. So reactive molecule ने पहले activation energy cross किया, that's called activation energy, and after that they form the products. So this is the heat of, now this difference between the reactant energy of the reactants and products, this is energy of the reaction. I will write it del H. So first reactants absorb the energy and form the activated complex, and then they form the products A plus B and gives plus B. So this energy is called the activation energy, and here it forms the activated complex, and at this time they absorb the energy, that is called threshold energy, and they have to cross the energy barrier, this is called activation energy barrier. They form the activation energy barrier. Now energy required to form the activated complex, activated complex जो बनने के लिए जो energy reactant molecule ने absorb की, that's called activation energy. So I will write it here. Now this activation energy जो है, activation energy, it plays an important role, in the defining the rate of reaction, as you have seen, rate of reaction. For example, I will write a reaction twice NO plus O2 gives twice NO2. This is the same reaction. And इसी तरह दूसरी reaction twice CO plus O2 gives twice CO2. Now pehli reaction twice NO plus O2 gives twice NO2, and for this reaction the activation energy is low. Activation energy is low. That means this reaction is fast, so the reaction rate, it decides the rate of reaction. This reaction is fast, and for this activation is high, and it is slow reaction. हालांकि दोनों रिएक्शन एक जैसी लगती हैं, लेकिन एक में जो पहली रिएक्शन है ट्वाइस NO plus O2, इसमें रिएक्शन जो है एक्टिवेशन एनर्जी लो है, सो द रिएक्शन इज फास्ट. दूसरी में जो रिएक्शन जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, सो इसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, सो इसलिए द रिएक्शन इज स्लो एज कंपेयर टू दिस फर्स्ट रिएक्शन. नाउ consider a reaction. We will एक हम reversible reaction लेंगे. A plus B gives C plus D. This is a reversible reaction. What will be the activation energy for the forward, and what will be the activation energy for the backward reaction? You know, in the reversible reaction, जस्ट एक्टिवेशन आप जानते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को भी लगता है, उसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को भी एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन लगती है. जस्ट activation energy, I will write just as activation energy is required for forward reaction, similarly activation energy is required, activation energy is required for backward reaction. So in the reactant, you know,
reactant molecules in the forward reaction, reactant molecules in the forward reaction, and the product molecules in the product molecules in the backward reaction. In backward reaction follow the same energy path. यानी reactant molecules in the forward reaction and the product molecules in the backward reaction follow the same energy path. एक दोनों energy path होते हैं, but activation energy will be different. For example, I will write here reaction. If it is exothermic reaction, for example, this is the energy of the products EP, and this is the energy of the reactants. So this is the threshold energy. So first, reactant molecules will absorb energy, and they will form the products. So यह आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बन जाए. इसका मतलब है this is the activation energy for the backward reaction, and this is the energy path. तो एक ही है दोनों की, लेकिन यहाँ पर जो है बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और reactant की एक्टिवेशन एनर्जी कम है. इसका मतलब है if activation energy for the reactant is less than activation energy of the products, if activation energy of the activation, I will write if activation energy of forward reaction is less than activation energy of the backward reaction, this reaction is exothermic. If the activation energy for the forward reaction is less than the backward reaction, this is exothermic. For example, I will write another reaction graphically. I will show it. Now this is the reactants, and this is the products. So here they absorb the energy and form the threshold energy, absorb the energy equal to the activation energy, and so the energy becomes the threshold energy. Now this is the energy here. This is the activation energy of the products, this is the activation energy of the reactants. Now if the activation energy of the reactants is greater than activation energy of the products, activation energy in the forward reaction is greater than the activation energy in the backward reaction, so then it is the endothermic reaction. So if the activation energy in the forward reaction, activation energy in the forward reaction it is greater than the activation energy in the backward reaction, this reaction is then it is endothermic. So in case of exothermic reaction, activation energy for the forward reaction is less than the activation energy for the backward reaction, and in case of endothermic reaction, activation energy is greater than activation energy of the backward reaction for endothermic reactions. So this is the activation energy and activated complex.